Hello students, today we'll learn the most important concept GST. Let's start with journal entries including concept of GST. Goods and Service Tax. GST stands for Goods and Service Tax. So now this concept is GST on purchase and sale transaction and how to pass the entry including GST on purchase and sale transaction. GST on purchase and GST on sale. GST on purchase is called as input tax and GST on sale is called as output tax. Input tax is divided into two parts. First is input GST and input SGST. So GST on purchase is called as input tax and GST on sale is called as output tax. GST has two components. First is CGST and second is SGST. So CGST or SGST is always half of GST. Suppose rate of GST is 28%, then CGST and SGST will be 14%, that is half of GST. Same way, if GST is 18%, then CGST and SGST will be half of GST, that is 9%. GST at the time of purchase of goods or assets, it is debited, and GST on sale of goods or assets is credited at the time of sale of goods and assets. तो हमको जब भी गुड्स परचेज करोगे या असेट्स परचेज करोगे तो हमको इनपुट टैक्स मींस इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एचजीएसटी को डेबिट करना है. जब भी हम गुड्स या असेट सेल करोगे तो हमको आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करना है. एंड रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी either in input tax or output tax is half of GST. Now let us take example on GST on purchase and GST on sale. Now example number 1, it is on GST on purchase. Purchase machinery from JRD Tata worth rupees 50,000 at 18% GST and amount paid by check. तो हमने परचेज किया है मशीनरी किससे? JRD टाटा से. कितने की? 50,000 की. एंड रेट ऑफ जीएसटी इज व्हाट? 18%. मींस इन दिस एग्जांपल रेट ऑफ सीजीएसटी एंड रेट ऑफ एसजीएसटी विल बी हाफ ऑफ जीएसटी, दैट इज 9%. एंड अमाउंट इज पेड बाय चेक. तो जब भी हमने चेक से पेमेंट किया है तो हम क्या यूज करेंगे? बैंक अकाउंट. तो फर्स्ट लेट अस मेक द वर्किंग नोट. So the working note is as under. Now, purchase for the machinery is 50,000. Add CGST. हमेशा CGST और SGST add करना है. Okay. Again, यहाँ there is a term typing error. So let me correct this. Okay. Here will be SGST. Okay. Now it is corrected. Okay. Now machinery cost is how much? 50,000. Add CGST at the rate of 9% and add SGST at the rate of 9%. तुम GST परचेज पे निकालो या सेल पे निकालो, GST विल बी ऑलवेज एडेड. कि जो भी हम प्राइस पे करेंगे ऑलवेज GST को ऐड करने के बाद ही पे करेंगे. ओके. एंड अमाउंट इज हाउ मच? 59,000. Now what is the journal entry for GST on purchase of machinery? Now मशीनरी परचेज किया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन? व्हाट कम्स इन? मशीनरी. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट. एंड अगेन जब भी हम गुड्स परचेज करोगे या असेट्स परचेज करोगे, मैंने बताया था इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी डेबिट होगा. तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट
ओके 4,000 4,500, हमने अमाउंट कितना पे किया 59,000. तो क्रेडिट द गिवर, हु इज गिवर बैंक, तो टू बैंक अकाउंट 59,000. ओके, तो अगेन आई एम रिपीटिंग द एंट्री. Machinery account debit. Debit what comes in? What comes in machinery? Input CGST and input GST is always added. Purchase करोगे तो भी ऐड करना है, सेल करो तो भी ऐड करना है. And it is always debited at the time of purchase of assets or goods. तो input CGST account debit, input SG account debit. और मैंने पे किया है, कहाँ कैसे पे किया है, मैंने चेक से पे किया है. तो वेनर हम चेक से पे करेंगे, क्या यूज करेंगे हम लोग को, बैंक अकाउंट. तो बैंक इज इन पर्सनल अकाउंट, तो क्रेडिट द गिवर, हु इज गिवर, बैंक. तो दिस इज जीएसटी ऑन परचेज. हर बार जब भी क्वेश्चन है एग्जाम में, तो वैसी वर्किंग बनाना है, एंड एंट्री विल रिमेन सेम. समझो गुड्स परचेज किया है, तो इंस्टेड ऑफ मशीन हम क्या यूज करेंगे, परचेज अकाउंट. तो एंट्री क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. Now let us take example on GST on sales. Sold motor car for rupees 1 lakh at 28% GST and amount received by check. मैंने कार बेची at a cost of rupees 1 lakh, a selling price of rupees 1 lakh, और मैंने उस पर जीएसटी चार्ज किया 28%. तो इन दिस केस एसजीएसटी एंड सीजीएसटी both will be 14%, and amount received by check, then you use bank account. So let us first make the working note. Now sale price of motor car is how much, 1 lakh. Again purchase हो या सेल हो, ओके, हमको जीएसटी ऑलवेज ऐड करना है. यहाँ पे हम जब सेल करेंगे, हम जीएसटी के साथ पैसा लेंगे सामने के पास से. ओके, तो जिसको भी हम सेल कर रहे हैं उसको हम जीएसटी ऐड करने के बाद पैसा रिकवर करेंगे. तो अगेन जीएसटी परचेज और सेल दोनों में क्या करेंगे, ऐड करना पड़ेगा. तो एड सीजीएसटी 14%, तो 1 लाख का 14% 14,000. अगेन सीएसटी सेम वे, 1 लाख का 14% 14,000. देन अमाउंट रिसीव विल बी 1,28,000. अमाउंट कैसे रिसीव हुआ है, बैंक से. तो डेबिट द रिसीवर, हु इज रिसीवर, बैंक. तो बैंक अकाउंट डेबिट. मैंने क्या सेल किया, मशीनरी मैंने सेल किया, राइट. तो क्रेडिट मशीनरी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है. तो मशीनरी गोज आउट, तो टू मोटर कार अकाउंट. और मैंने बताया था जब भी सेल करोगे, असेट सेल करो या गुड्स सेल करो, GST on sale will be always credited, and GST on sale is called as output. So to output CGST, to output SGST. तो बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट रिसीव्ड 1,28,000. To motor car, cost of drive is how much, 1 lakh. And GST, sorry, and CGST and SGST is rupees 14,000 and 14,000. Okay, you can practice number of sums from your government as book. Okay, this was the concept of GST on purchase and sale of assets and goods.